Good evening, sir. Am I audible? Yes, audible. Yes, sir. Yes, today topic. Sir, name reaction था and name reason. Name reaction and reagent. Yes, na. Yeah, let me start first of all. Yes, sir. Let me start. Then first is name reaction. What the main application of name reaction in organic chemistry? What the purpose of name reaction in organic chemistry? Sir, basically for the preparation of some type of molecule, some of the scientists like Urj, that means Grignard, there are so many Markonikov, there are so many scientists give some useful, that means synthesis of reagent, that means product. For that product, basically name reaction is important for synthesis of any molecule. Okay, synthesis of any molecule, or synthesis that means increasing carbon chain length, or from carbon to, that means from alkane to alkene, or from some of like that. Main purpose is that means for the conversion of any molecule to one reactant to another product. That is the main purpose of name reaction, basically the conversion. And for the with the help of name reaction, we prepared so many important molecule for our mankind also. That means which help in our, that means human being, for biomedical application. Suppose like biomedical application, yes, all these things. Awesome. First name reaction is basically aldol condensation. What the main application of aldol condensation? Yes, sir. From aldol condensation, we get alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated ketone. Okay, so suppose if one molecule has, that means basically carbonyl compound, in carbonyl compound which has alpha hydrogen in it, in basic medium or in acidic medium, it self condense or it condense with another aldehyde or ketone molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. Suppose I am taking acetone molecule. Okay, suppose I am taking acetone molecule in presence of base OH minus. It will first base will abstract this CH to acidic hydrogen from CH3, and it will give CH3 C double bond O CH2 minus. Okay, after that this CH3 C double bond O CH2 minus will attack another acetone molecule. Okay, another acetone molecule, and it will form the first of all alcohol. Okay, first of all it will form alcohol. Okay, after that, giving heat to a sufficient amount, this alcohol will release as dehydration, and it will form alpha beta unsaturated ketone. Alpha beta unsaturated ketone. Basically, the main application of aldol reaction is to condense two molecule which has alpha hydrogen in it. Alpha hydrogen, or condense basically two type of carbonyl molecule which has alpha hydrogen on it. Yes, sir. Which has alpha hydrogen. And main application for this is we can say that alpha beta unsaturated carbonyl. We can form alpha beta unsaturated carbonyl compound. Yes, sir. And another one maybe 1 minute, sir. Another one maybe we can form some of the, what it is called. Yes, sir. Basically, this is the main application. Alpha beta unsaturated carbonyl compound. We can form some of the dye also.
with the help of aldol condensation also. Yes, sir. Sir. Yes. Aldol condensation and cross condensation and intramolecular condensation. What the difference of these one? Aldol, cross, Sir, intra. In aldol condensation, basically only self condensation can happen. Okay. In cross aldol condensation, we can take two molecules. That means it can be bimolecular also. That means one molecule of we can take one molecule which has alpha hydrogen in it and another molecule which don't have alpha hydrogen in it. So basically, what it is called those type of cross aldol condensation is basically where we react two aldehyde or two ketone. Okay, and intramolecular condensation is that type of reaction where two aldehyde group or two ketonic group in the same molecule. Then we can proceed through. Then we can get intramolecular aldol condensation, sir. Yes, sir. Suppose in this molecule CH3, C double bond of CH3, and in presence of OH minus, we can get here only normal aldol condensation. In molecule CH3, COCH3 plus CH3, C double bond OH. Here we will get cross aldol condensation, and from here we can get four types of product. Okay, four types of product we will get. And if in this molecule, suppose this one, yeah, in this molecule we will get, in presence of base, we will get intramolecular aldol condensation. We will get intramolecular aldol condensation. Yes, sir. Is it correct? Yes. In cross aldol condensation, we can get four types of product. Yeah. In normal aldol, we can get cis or trans like that. But here, intramolecular aldol condensation, we also can get two types of product. Yes, sir. Yes. What the example of cross aldol condensation and intramolecular condensation? Explain. Yes, sir. Yeah, already I have explained this one. Yes. That means if we take acetone and acetaldehyde, then we cross aldol product. Whereas in this molecule, we will get intramolecular aldol condensation. Yes, sir. I can write the product also from here. This is intramolecular. So here we can get this product. Yeah. These two are cross product from this reaction. These two are cross product from this reaction. Whereas from here, yes, sir. This one. This one is the self-condensed product. That means we will get four types of product from aldol. Okay, that means in intramolecular. Yes, sir. And in this one, suppose I am taking this molecule. Okay, so from here we can get product like that. The intramolecular. I am not showing the mechanism. I can show the mechanism also. This is intramolecular. This is cross aldol, and this is the normal aldol. Yes, sir. In cross aldol, we can get self-condensed product also, and these two are the cross product, and these two are the self-condensed product. Yes, sir. I have written only the product, sir. Yes.
Any drawback, limitation of aldol condensation? Any drawback in aldol? Aldol basically will get in basic medium. Yeah, sir. That means in ring structure we not get the exactly the, that means major amount of product. That means in ring type of molecule we can get 7-member ring also, we can get 6-member, or we can get 5-member. That means the majority. That means majorly we will not get that much of product from ring structure like that. That means intramolecular aldol condensation are less specific. Yes, sir. और क्या होगा सर aldol का? इंटरचेंज नहीं हो सकता ना इसका? हाँ सर, इंटरसेंस मतलब सर इसका इंटरमीडिएट क्या है? सर इसका इंटरमीडिएट तो सर इसका क्या होगा? और वो तो इनोलेट है ना, इनोलेट। इनोलेट आयन हाँ बनेगा सर, इंटरमीडिएट। हाँ इनोलेट है सर। यस सर, इनोलेट। तो ये इंटरसेंस नहीं हो सकता। यस ना। इसकी यील्ड क्या होती है? वेरी सर पुअर आती है यील्ड। हाँ सर, Ketones then yield is very poor due to ड्यू टू the alkyl group increase electron density at carbonyl carbon is carbon so हाँ less सर, इनोलेट बिकम electron अनस्टेबल density compared to the aldehyde. One point. Second point, both alkyl group create steric hindrance at the carbonyl carbon atom. So carbonium ion can't attack easily. That's the reason, due to very less poor yield product. in this list. Okay sir, Next, move on Wirch reduction. What the application Wirch? हाँ सर, Wirch reduction is basically the reduction of aromatic ring. Yes sir, Wirch reduction is basically reduction of aromatic ring. Okay, with the help of sodium and liquid ammonia. Okay, sodium or liquid ammonia. So suppose I am taking this benzene ring. Suppose I am taking this benzene ring in presence of sodium ammonia. This benzene ring, that means reduction, basically the addition of hydrogen, one bond will get reduced. Okay, this can be the product from Wirch reduction. Yes sir. In the main criteria of Wirch reduction is in electron in the presence of electron donating group, it gives, in the presence of electron donating group, it gives, suppose like that, it gives this product. Am I audible? Yes. Or in presence of electron withdrawing group, suppose like CnNO2, then it will give 1,4 addition product. Yes sir. These two are the main difference in presence of electron donating group, in presence of electron withdrawing group. Yes sir. What the intermediate of its reduction? Intermediate. One is third, resonance stabilized anion radical. Anion radical is there. Is it correct? Yes. Anion radical, I think. Resonance stabilized anion radical. That means it's suppose like that. That is, yeah, that is. It should be like this. Anion radical. Resonance stabilized anion radical. You can check like this. Awesome.
इसके ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या है विर्च के? बार्स के ड्रॉबैक लिमिटेशन ना, तो मतलब वर्च रिडक्शन। बार्स का नो आइडिया सर दिस वन। दैट मींस ये बेसिकली द रिंग का कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ होगा सर। इसका मोस्ट स्टेबल रेडिकल एनाइंस, हाँ सर। स्टेबल मोस्ट, क्या रहता है इसका? हाँ सर। इंटरमीडिएट मोस्ट स्पीसीज जो बनती है रेडिकल एनाइन, वो मोस्ट स्टेबल होती है कि लीस्ट? व्हाट द रीजन? सर वो लीस्ट स्टेबल होता है। नो 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 सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है ये। दिस इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नेक्स्ट मूव ऑन बैकमैन रीअरेंजमेंट। हाँ सर, बैकमैन। यस, हाँ सर। एक्सप्लेन। Sir, in Beckman, that means one oxime is there. In presence of oxime, in presence of acid, the oxime rearrangement. In presence of acid, the oxime rearranges to give ketone amide. Okay, amide. Then it is called Beckman rearrangement. In presence of acid, basically it rearranges. Okay, sir. In presence of acid, Beckman, oxime. Suppose I am taking this reaction RCR dash double bond and OH. This is the oxide. Okay. So now, in presence of acid, first of all, this acid will propagate the OH group, and it will convert it to OH2 positive, and then R and R dash. After that, this OH2 positive will, this R group will migrate, then OH2 positive will remove. That means water will remove. So we will get RC positive double bond N. Yeah. And here R dash will be there. Okay. So now this positive water will add, and we will get basically RCOH double bond N R dash, and after that we will get tautomerization with the help of tautomerization RCONH. This one. That means amide. Amide will form in Beckman. हाँ सर। यस, इसमें चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होता है कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन नहीं क्या? सर, कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन नहीं होता है। मतलब if the alkyl group, that means migrating alkyl group is chiral in nature, then the retention of configuration will take place. That means sense नहीं होता है configuration. Configuration sense नहीं होता है। हाँ सर। There is no change in configuration of alkyl group. Yes, are there? Alkyl group, yes sir. इसका क्या है? इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट सर ये ऑक्साइड का कुछ था, ये 1 मिनट सर, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा एसीटोफेनॉन सर? या एसीटामाइड क्या बनता है? ये सर एसिड एमाइड बनता है। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। ये इंटरमीडिएट का क्या नाम होगा? ये इसका तो इंटरमीडिएट नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज। एसीटामाइड ही बनता है इसमें इंटरमीडिएट। एसिड एमाइड, RCONHR। ये इंटरमीडिएट नहीं सर, ये तो प्रोडक्ट होगा। एसिडो हाँ, एसिडोफिनोन से एसीटामाइड, ये तो प्रोडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट बनेगा इसमें आइसोसाइनेट है, RCNR। पॉजिटिव आइसोसाइनाइड नहीं है, वो तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। वो इसका नाम आइसोसाइनेट RCNR है, तो ये बन गया इसका नाम तो नहीं है। एक बार देखना होगा सर इसको, आपको अगर पता है तो। सर ये मतलब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बाद कार्बन में पॉजिटिव आ जाता है लास्ट में।
हाँ सर। कैप्रोलैक्टम तो ये इसका वो है तो हाँ सर। नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन इज द इंटरमीडिएट इन बेकमैन रिएक्शन। नाइट्रीन। नाइट्रीन ओके सर। एग्जैक्टली ये नाइट्रीन नहीं है। मैकेनिज्म देखता हूँ मैं। नहीं, नाइट्रीन ही आएगा ना। जो इंटरमीडिएट को नेगेटिव जो लिख लेगा ना, वो नेगेटिव लिख लेगा हाँ ना। जो एन के ऊपर OH2 पॉजिटिव होता है तो वो H2 निकल जाता है, तो वो जो CN है वो ट्रिपल हाँ बॉन्ड बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नाइट्रीन ही आएगा। हाँ। ओके सर। ओके सर ठीक है। यस, बैकमैन रीअरेंजमेंट। हाँ तो बोल लिया मैंने बेकमैन। बैकमैन इसमें रीअरेंजमेंट में हम, हाँ हो गया ये सर। यस, हो गया कंप्लीट। हाँ बेकमैन तो हो गया, बोल लिया मैकेनिज्म भी बोल लिया। कॉन्फ़िगरेशन मतलब रिटेंशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन जो रिटेंशन होता स्टेप है ना, स्टेप के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है ना। स्टेप जो होते है। हाँ हैं, स्टेप तो इसके 6 हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि इसका इंटरमीडिएट कौन सा फॉलो कर रहा है एग्जैक्ट। क्योंकि बैकमैन का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ क्योंकि सर। इंटरमीडिएट से बहुत सारे स्टेप कंफ्यूज कर देता है वो। हाँ सर यस डेफिनेटली सर। जैसे अगर ये इंटर इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आएगा ही, मतलब पूछेगा जो, ऑगमेंट में क्या इंटरमीडिएट है। हाँ, हाँ इंटरमीडिएट वैन हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में। जो भी मैकेनिज्म अगर आप लेते हैं तो इंटरमीडिएट तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ सर यस। कैनिजारो, यस, नेक्स्ट फॉलो कैनिजारो रिएक्शंस। Kenizero. यस, Yes, sir. In Kenizero, if the aldehyde don't have, that means alpha hydrogen in it. If the aldehyde or ketone which don't have alpha hydrogen in it, then it will it will get self oxidized or and reduction. That means it get disproportionation reaction. That means from suppose I am taking this alcohol aldehyde Cr3 C double bond H. So here is no alpha hydrogen is there. Then it will convert it automatically to CH2OH or R3C COONH. Automatically it will convert it to alcohol. Automatically it will convert it to alcohol and carboxylic acid. Okay, so this is the main purpose of Kenizero reaction. That means Kenizero reaction, which aldehyde or ketone, which those aldehyde which do not have alpha hydrogen in it, it will undergo self oxidation and reduction in the help of base to get alcohol and carboxylic acid. This is called Kenizero reaction. Yes, sir. कैनिजारो इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर है। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का सेकेंड ऑर्डर है, विच बेस फर्स्ट ऑर्डर है सर। वेरी इंपॉर्टेंट दिस है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है केनिजरो विद ओवरऑल एल्डिहाइड थर्ड इज ऑर्डर रिएक्शन, ओवरऑल। यस सर, विद एल्डिहाइड इट इज सेकेंड ऑर्डर एंड विद बेस इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। इज इट करेक्ट सर? यस, देखो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ना ऐसे, तो बेस आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ बेस के साथ फर्स्ट ऑर्डर है। यस, इन मतलब इन स्लोएस्ट स्टेप the transfer of hydrogen take place now. Here that means 2 aldehyde is required, so therefore it is second order with respect to aldehyde, or
with respect to that means base, it is first order. Yes, sir. बल्कि ग्रुप में रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? कैन यारो, व्हाट द रीजन? bulky group में मतलब base cannot attack, so therefore it is no reaction take place, I think, in bulky group. Am I correct? यस, रिएक्शन नहीं होता, रिडक्शन नहीं हो पाता ना, ड्यू टू reduction नहीं हो पाता. रीजन. That means जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है शायद. ये मतलब एक पढ़ा था मैंने कहीं पे, मतलब आज से वो नोट नहीं मिला मुझे. मतलब जो छोटा होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है शायद, ऐसा कुछ था एक. अगर यहाँ पे क्रॉस ड्यू के टू लिए रीजन होगा. इज, यहाँ पे ड्यू टू रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस हाँ, जैसे हाँ. हम कोई भी ग्रुप लेते हैं, C6H5 CHO ले ले ले, तो OH जब बेसिक अटैक करेगा तो उसको जो बल्कि ग्रुप है उसका रिडक्शन नहीं हो रहा, जिसका रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके. ये कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? सर क्रॉस में मतलब if same मतलब two reactant which that means which do not have alpha hydrogen. Suppose I am taking C6H5 CHO. That is, suppose I am taking benzaldehyde. Okay, benzaldehyde, and I am taking one is benzophenone. Okay, benzaldehyde and benzophenone. Then in the presence of base OH minus, this benzaldehyde will oxidize to C6H5COH, whereas this benzophenone is oxidized to this one. Yes, sir. Is it correct? Yes. C6H5 CH2OH. या मतलब दो अलग अलग लिया था मैंने, बेंजोफिनोल लिया था. Yes, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन. हाँ, हाँ. इसमें फास्ट प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंडीशन में, वो क्यों होता है, वह उसका रीजन क्या है? Fast, that means the carbon is electron deficient. That's why I think. Is it correct? I don't know, sir. That's why. Yes, similar logic. हाँ सर. Similar logic ना, मतलब Yes. carbon I think more electrophilic in nature. That's why fast proton that's what. What is Clengian condensation? Next, move on. Claisen. Yes, sir. Claisen condensation is the condensation between ester. Okay. If an ester has alpha hydrogen in it, that means suppose like methyl. That means ethyl acetate. Sorry. Methyl acetate is with there. That means suppose I am taking this molecule CH3 COO C2H5. Then in presence of base, it will give CH3 C double bond O. Yes, sir. Suppose it's like that. I have to write the mechanism. That's one. यहाँ पे ये था सर. 1 minute. CH3. हाँ सर. Alpha beta unsaturated acid alpha beta unsaturated ester ही होगा. Yes. Is it correct, sir? Formation of alpha beta unsaturated ester. ये सबका रिएक्शन का मतलब मुझे एक लाइन बनाना पड़ेगा, मतलब एक लिख के, मतलब कहाँ से क्या बनता है
कल एक बना लूंगा सर। सेल्फ कंडेंसेशन है ये सर। हाँ सर। बीटा आई थिंक आई हैव रन यहाँ पे ये 1 मिनट सर। गड़बड़ी हो गया। 1 मिनट सर। CH2 this one. 2 ester molecule present in strong base. हाँ सर। हाँ सर 1 मिनट सर 1 मिनट। बीटा की तो सर यहाँ पे बीटा की तो एस्टर बनता है। यस सर। हाँ सर क्या पूछा आपने? यहाँ पे बीटा की तो एस्टर बनता है। हाँ यही और बोल ये रहा हूँ। मतलब ये 2 ester molecules in presence of strong base is called is Kleinian condensation. Claisen. That means sodium ethoxide, or suppose strong base like sodium ethoxide, alkoxide group should be there. Alkoxide base is there. Sodium alkoxide. Yes sir. क्या नाम बताया था आपने प्रोडक्ट का? बीटा कीटो एस्टर बनता है। बीटा कीटो एस्टर। यस पहले मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोल दिया, मतलब पार्किन कंडेंसेशन का था शायद कुछ, मतलब सेम टाइप का ही है ना मैकेनिज्म रिएक्शन, तो इसलिए। हाँ सर। बाकी एक बार दे देता तो मतलब मैकेनिज्म बना देता अच्छे से। हाँ सर। सर एक काम करूंगा मैं, मतलब सब रिएक्शन का एक एक लाइन बना के, मतलब यहाँ से कैसे बनता है ये हेडिंग लगा के, उस रिवीजन के लिए अच्छा होगा। यस बिल्कुल। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे रिवीजन के लिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम और इंटरमीडिएट ये होना चाहिए। हाँ तो सर। ऐसी रिवीजन करते हैं ना, जब नेट की तैयारी करते हैं तब ऐसा करते हैं, हाँ सर। हाँ सर। नेट गेट के टाइम पे। सही सही। मतलब यहाँ पे रिएक्शन। हाँ सर। बहुत सारी नेम रिएक्शन होती है ना, तो ऐसा कैसे याद किया जाएगा? हाँ वही मतलब टाइम कम बहुत होता सारा। है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पता चल जाता है ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या है, तो कैटालिस्ट क्या है, तो कौन सी रिएक्शन है, तो पता। हाँ वही सर। क्लेंजर रीअरेंजमेंट। बहुत। हाँ सर क्लेजन तो मतलब ये तो थर्मल और उस दिन भी पढ़ाया था, मतलब एराइल एल्काइल, एराइल एल्काइल एराइल इथाइल। यस सर। Suppose it is like that, from here we will get allyl phenol is there. Yes, this is the Claisen rearrangement. That means allyl ether. Claisen rearrangement is involved. That means rearrangement of allyl ether to a allyl phenol is called basically Claisen rearrangement. Is it correct, sir? Yes. That means it can come through this side also. That means not only in ortho position, it can come to para position also. If the bulky that means if this position ortho position is blocked by some of the group, that means some of the substitution like methyl, then this group can migrate to para position also. Yes, sir. We can get para product also. Yes. This is also a 3-3 sigma-tropic rearrangement. Yes, sir. 3-3 sigma-tropic rearrangement is this one. Yes. Next is Kleinian rearrangement, Clemenson reduction. Ah, sir. In Clemenson reduction, that is conversion of an carbonyl compound, that means ketone or aldehyde to alkane hydrocarbon, is basically called Clemenson reduction in the with the help of zinc amalgam or HCl. With the help of zinc amalgam and HCl, that is called Clemenson reduction. That means conversion of carbonyl group to methylene group. It's called Claisen rearrangement. Suppose I am taking CH3, C double bond O, CH3, and I am putting zinc amalgam HCl. So here this C double bond O group will convert it to methylene group. That means CH2 group. Okay. So from
acetone. From acetone or propanone, we will get propane. We will get propane molecule. Yes, sir. But if the molecule has acid sensitive group, then this reduction is failed. Okay, if the molecule have acid sensitive group, then the molecule then this reaction will fail. Okay, yes, acid sensitive group and high molecular weight substance. With high molecular weight substance and acid sensitive group, this reaction is failed. Yes, sir. Yes, failure of Clemens and reduction. Yes, no. Sir. Next is what the difference between Curtius and Schmidt reaction, Schmidt rearrangement. Sir, Curtius and Schmidt. Schmidt दोनों में ही मतलब reaction. आइसोसाइनाइड ही बनते हैं सर. मतलब एक में तो एसाइल एजाइड होता है. Schmidt reaction and Curtius rearrangement. हाँ सर, एक में दोनों में ही एसाइल एजाइड ही बनता है. मतलब एसाइल एजाइड और उसके बाद मतलब आइसोस दैट मींस RNCO ग्रुप बनता है. इज इट करेक्ट? डिफरेंस तो सर Curtius और Schmidt का 1 मिनट सर, ये तो Schmidt में ही सेम ही था शायद. सेम मॉलिक्यूल बनता है सर. Is it, sir? That means in what is this called? In Schmidt, okay. In Schmidt we get only like amine, but in with the help of that is called Curtius. With the help of Curtius we can get RNH, COOR, RNH, CO, CH3. Different type of molecule we can get with the help of Schmidt. Is it correct, sir? That means in Schmidt we get only amine molecule as a main product. We get only amine. Yes. Amine. Whereas in Curtius we can get acyl amide or some of like star. Yes, sir. Is it correct, sir? Or we can get amine also. हाँ सर. Yes, you told about Curtius. हाँ सर. सर Curtius में मतलब ये इंटरमीडिएट बनता है RNC-O. This one. Okay. So यहाँ से मतलब हम लोगों को क्या बना, मतलब if we put alcohol, then we will get RNH-COOR-. If we put water, we will get RNH2. Yes, sir. If we yes, that will be the main product, I think. Is it correct? Amine. If we put amine, sir, then we will get RNH, COONR also. Yes, sir. There are so many products from Curtius we will get. The main intermediate is RNCO. Yes, sir. यह तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है, बट लास्ट में जाके मतलब ये बनता है, वहां से मतलब हम लोग बाकी सब बना सकते हैं.